मेरा भी Oves Anwar है, मैं डायरेक्टर हूँ Counter-Terrorism and Militancy Society with Crimes. Counter-Terrorism Center, our focus is looking at international humanitarian and how it applies in domestic operations. आपका पाटा ऑपरेशन हो गया, कराची में जो रेंजर्स का ऑपरेशन है, जो हिंदुस्तान में ऑपरेशन है, स्वास्थ्य में जो ऑपरेशन है, उन्हीं को हम एग्जामिन करते हैं। इसमें काफी हमारी कॉम्प्लिकेशन पाकिस्तान में भी कुछ हैं, एक हमारी प्रोवेक्टिव डिटेंशन पे है, जो पुलिस और आर्म्ड फोर्सेस प्रोवेक्टिव डिटेंशन कैसे यूटिलाइज करते हैं, कौन से टीम में हैं। पाकिस्तान में दो फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं, एक WAC एक्शन ग्रीवेंसेस पावर रेगुलेशन जो पाटा की, और फिर हमारा टेररिज्म एक्ट और मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक वाटर रिसोर्सेज के तहत जो डिटेंशन होती है, ये डिटेंशन हुआ जो बगैर चार्ज किए सस्पेशन की बेसिस पे डिटेन करते हैं और उसकी प्रोसिक्यूशन नहीं होती। पाटा के अलावा पाकिस्तान में ज़्यादा जो फॉर पर्टिकुलर पीरियड ड्यूटी डिटेन होती है 2 years के अंदर 8 दिन का पारा होते हैं, और बाकी एरियाज में बाकी मैं तो ये ह्यूमन राइट्स एंड काउंटर-टेररिज्म regime में है। अभी पिछली रिपोर्ट्स में निकाले पूरी ह्यूमैनिटेरियन रिपोर्ट ट्रायल प्रोसीजर है, उसमें जो इन्वेस्टिगेशन एफआईआर से लेके जो भी कुछ रिपोर्ट्स हैं ह्यूमन राइट्स एब्यूज पोटेंशियली इंक्रीज करके या बाकी वो करते हैं उसको हमने हाईलाइट किया है। इसके अलावा बहुत सी चीज़ों पे हमारी पब्लिकेशन हैं, IHL कैसे अप्लाई करती है, वो सब हमारी वेबसाइट है, सो मोस्ट वेलकम टू गो एंड डाउनलोड दोस। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट जो आज सुबह साहब ने भी डिस्कस किया, कॉन्स्टेंट ने भी डिस्कस किया है, IHL पाकिस्तान के डोमेस्टिक फ्रेमवर्क जो है, इन दोनों को मैच करने की, और मैं कोशिश करूँगा कि हम यूजुअली एक वैक्यूम में या एक स्पेसिफिक लॉ को देखते हैं उसको आपके एरिया में तो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट इज, एक दो लॉज को ये चार्जेस जो है वो फ्रेमवर्क में अप्लाई होते हैं, बट here what I will try to look at is the entire framework of how the law or the state responds to violence, and that's what the main focus is here. IHL जो है वो extreme form of violence, war हो गई, war-like situation, civil war हो गई, वहाँ पे अप्लाई होता है। Below that threshold, वो जो threshold कौन सा बात कर रहा था कि sporadic violence, internal disturbance, उसके लिए क्या हमारे पास mechanism है? तो हमने एक theoretical framework develop किया है spectrum of violence का, उसकी कोई भी debate होगी, human rights की भी debate होगी। So any questions that you have, please go ahead to ask on this. Overview सबसे पहले counter-terrorism और militancy के trends देखेंगे पाकिस्तान में। उसके बाद human rights versus security, सुबह साहब ने भी एक सेशन की थी जो तस्वीर थी जिसमें वो बैलेंस करने की थी कार्टून का। उसमें हम ये देखें कि state के अंदर what are the factors which determine how this balance between human rights and national security या counter-terrorism initiatives ये बैलेंस कैसे स्ट्राइक होती है, कौन से फैक्टर हैं जो प्ले करते हैं, आप सभी इससे और फिर उस स्पेक्ट्रम ऑफ वायलेंस की फ्रेमवर्क जिसके अंदर हमने लॉज इनपुट करेंगे पाकिस्तान टू बेटर अंडरस्टैंड दिस, हाउ डज द स्टेट रिस्पॉन्ड टू मिलिटेंसी, इंसर्जेंसी जिसे मेंशन हुआ था। फिर हम स्पेसिफिक एक्ट्स देखेंगे, इसमें ब्रीफली में जाऊंगा। प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट को डज नॉट अप्लाई एनीमोर, बट इससे वेरी वैल्यूएबल लेसंस ले सकते हैं कि पाकिस्तान में हाउ डज द लेजिस्लेचर रिस्पॉन्ड टू APS एक्ट या दीगर जो पाकिस्तान में टेररिज्म को और बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें इन्वेंशंस आई, इनोवेशंस आई जो स्टेट करने की जरूरत है। मिलिट्री कोड्स बड़ा ब्रीफली इसमें डिस्कस करेंगे और फाइनली एक्शन अगेंस्ट सिविल पावर रेगुलेशंस जो फाटा में अप्लाई होती हैं और खासकर नाउ जो फाटा में रिफॉर्म्स प्रोसेस चल रही है और उसमें जुडिशियल कंपोनेंट जो है जुडिशरी इज एक्सपैंडेड इनटू फाटा, उसमें भी वी हैव अ डिबेट ऑन दैट। सो स्टार्ट ये 2004 तक ट्रेंड्स हैं टेररिज्म की। आपको याद होगा मिड-90s में कराची में खासकर सेक्टेरियन एथनिक वायलेंस, NQM, मुख्तलिफ पार्टीज की वायलेंस थी और ये आपका वहाँ पे स्पाइक आया। उसके बाद लड़ आया, यहाँ पे हमने टेररिज्म एक्ट इनैक्ट की 1997 में, बट कोरिलेशन नहीं मिलती बिटवीन पासिंग एन एक्ट and a downward spiral in violence. So there's no real correlation between passing of the Anti-Terrorism Act and downward spiral. However, there are other factors. There was much more that happened in Karachi में. There was a stronger state response which took place there. फिर हमारा Nalin violence act and suddenly हमारा modern current form of violence है यहाँ पे आ गया है।
उसके बाद because of operations and reserve हो गया, बाकी भी operations पे हो गए, so this has now gone down and we are almost at this level now. अगर आप 2016, 2017 देखें, मतलब उससे violence has gone down tremendously Pakistan. Reasons क्या है कि ये इस एरिया में violence subside हो गई. सबसे पहले तो military takeover हो गया था. जब एक फौजी आ जाता है थोड़ा सा strong man in the street to वैसी violence suppress करता है. Shift in military focus from the eastern border with India to the western border. जहाँ पे infiltration of these issues थे, weapons smuggling, बहुत सारे issues थे. US invasion of Afghanistan, वहाँ भी suppression होगी, attempts at normalizing relations with India. जो Indian funding raw की जो पाकिस्तान में होती थी वो कुछ suppress होगी. And influx of foreign aid, we could do a better job with the money that we had. But terrorism has been on the rise since 2014. ये बड़ी इंटरेस्टिंग था. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो terrorist का modus operandi है, what types of terrorism was used here, was armed assault and assassination. So कराची में अक्सर टारगेटेड के लिए मुसलमानी हुई थी, ठीक है, टॉर्चर था ये, but main attacks were armed assault and assassination. आप देख सकते हैं ये blue line है, bombing and explosion. This has now become the main source. बार-बार हम न्यूज़ में देखते हैं कि bombing होनी है और armed assault has been also risen significantly. But terrorism का अगर हम dynamics से देखें, the point of terrorism is to cause panic, fear, insecurity in society. If you can achieve that with less human resource involvement through a bomb, car bomb हो गया, कुछ और हो गया, remote detonated, IED हो गया, place कर दिया, इस गाड़ी को हो गया, so it's easier to accomplish that same task without having to kill your own personnel. Armed assault will most likely your personnel will die, जो आपके terrorists होंगे. So this is an interesting change in how this happened. ये आप देख सकते हैं some of the major attacks that took place. अब ये मैंने आप देखें तीन hot क्या कहते हैं hot beds में कैसे violence के पास बलूचिस्तान में militancy कर रहा है, कराची में जो violence चल रहा है और conflict in FATA. I was Muslim community, ये दोनों एक नहीं है, and FATA is different. Can anybody explain why I would choose a different color? It's related to my debate at RSIL. इससे पहले जो आपने ये कलर दी है उसके बॉडी कहाँ से आ रहा है? नहीं close but other points there but that's not not necessarily बातचीत as well. This is related to the type or the legal regime that applies. ठीक है, फाटा में एक और legal regime है, ठीक है, Article 245 फाटा में वैसे ही constitutional status अलग है, वहाँ पे कोर्ट्स की jurisdiction नहीं, सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की. यहाँ पे बलूचिस्तान में and कराची we have a different framework. और हम अपने लीगल सिस्टम को आईएचएल की जैसे कांस्टेंट बात की थी कि आईएचएल में ह्यूमन राइट्स की अप्लाई होते हैं, वो सिर्फ पीस टाइम में अप्लाई हो सकते हैं. सो टेक्निकली अगर हम इसको देखें और मैं होप कि आपको एक्सप्लेन करूंगा, conflict, the armed conflict is existing in FATA and we recognize this through our constitutional mechanism. Article 245 हमने वहाँ पे अप्लाई कर लिया. Article 245 courts cannot question this executive action जब आपने military deploy कर दिया. दूसरा 199 में से engage जाता है. Writ jurisdiction खत्म हो जाती है कोर्ट्स की. We can't really अब पाकिस्तान में करते हैं. FATA तो वैसे ही it's a special area. ये सिचुएशन ना बलूचिस्तान में ना कराची में, वहाँ पे रेंजर्स जाती करें, एक्सेस जाती करें, you can go to the courts and get relief in that time. ठीक, let's move on. So ये बड़ी interesting debate है. Can you have greater security without infringing on human rights? Anyone? Okay, please. In an emergency situation when fundamental rights are under the constitution suspended for the time being. बिल्कुल, excellent point. और ये in fact our constitution has two forms of emergency. एक तो state emergency provisions है. 233. बिल्कुल. उसमें सब rights जो है वो derogate नहीं होते. कुछ rights उसमें से कम हो जाते हैं. Because the state does not have the machinery to enforce those rights. Disaster हो जाए कहीं पे या जंग की हालत हो जाए, all of these things. ना आपकी जुडिशरी काम करेगी जो enforce करती है rights, ना आपका पुलिस सिस्टम है, ना enforcement का कोई mechanism. That's why the state is compelled to withdraw its responsibility to
to give rights. Any other argument here? Can we have a system where human rights are secured while security is also secured? या आपकी एक सोसाइटी में जो अच्छी चल रही है सडनली उसमें टेररिज्म की प्रॉब्लम आ जाती है जी। फाटा को इस हवाले से ग्रे एरिया कहा जाता है, जहाँ FCR है वहाँ कुछ चीज़ें फंडामेंटल राइट्स वायलेशन में होती हैं, लेकिन FCR के नीचे वो प्रोटेक्शन शेल्टर दे देते हैं। एब्सोल्युटली। इसमें कुछ फैक्टर्स देखते हैं। सबसे पहले तो दिस इज एन एक्सेप्शनली कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। ये बैलेंस ढूंढना कोई ग्लोबल लेवल पे नहीं हो सकता। हर सोसाइटी का, हर कम्युनिटी का अपना एक इस पे राय होगी और अपनी इस पे डिबेट होगी। पाकिस्तान के लिए जो हम जिन राइट्स को ज्यादा तरजीह देते हैं, जिसको हम ज्यादा हाई प्रायोरिटी देते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए फिर हमें मैकेनिज्म डिवाइस करना होगा कि हमारी सिक्योरिटी भी प्रोटेक्ट हो। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम अप विद अ सॉल्यूशन फॉर एवरीवन। जो यूएस में राइट टू प्राइवेसी फॉर एग्जांपल बहुत हाई लेवल हुआ, तो जब NSA उनका है, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, वो जब या होमलैंड सिक्योरिटी एजेंसी, वो जब फोन टैप करती है या मुसलमानों के वो क्या उसको मेटा डेटा कहते हैं कि उसने कॉल्स कितनी की हैं ये वो, जब वो बिलियन ऑफ टेरर डेटास के हिसाब से ये रिकॉर्ड करें, उनके लिए इट्स अ प्रॉब्लम। पाकिस्तान में इफ द स्टेट हैड द पावर, जैसे सिस्टम में मेंशन किया इन्वेस्टिगेशन फॉर फेयर ट्रायल एक्ट जो कहते हैं, उसमें यू कैन गेट अ वारंट फ्रॉम अ हाई कोर्ट जज and you can intercept emails, phone calls, you can put a camera in the room, all of these things, secret hidden. हमारे लिए it's not as big a priority, ये जो right to privacy, मगर home privacy, that is a very high priority. जो American drones चला रहे थे, one of the biggest issues we had was that people sleep on their roofs, so they sleep in the open, women, men, so there could be issues of privacy. So ये हमारी बहुत, और अमेरिकन को ये अफगानिस्तान में भी ये उनका कंसर्न था। नाइट रेड्स थे, अपने स्पेशल फोर्सेस के साथ आते थे और रात के वक्त जब एक्टिविटी कम होती थी उसमें वो रेड्स करते थे। The biggest problem that they had was this night raids. हामिद Karzai said to the Americans कि इस इशू पे मैं तुम लोगों को निकाल सकता हूँ। My people, they are most disturbed because of this. So we have a different way of looking at, technically no right to privacy, right to home life. So these are different priorities that we have. We need to look at what we prioritize in the system when we are debating क्या security enhance करने के लिए हम किसी right to privacy दे सकते हैं या your right, किसी right to liberty जो है। एक solution है counter-terrorism का कि आप जिसके ऊपर भी शक हो बस उसको डाल दें आप detention for as long as it is. मसला हल हो जाएगा, but you are violating very serious fundamental rights there. So can we come up with that balance? I don't think so. It's not a good solution. But there are other solutions that will come up. कुछ फैक्टर्स जो हैं जो इस इक्वेशन पे इम्पैक्ट करते हैं। नंबर वन, existing human rights protections, how strong are they in the state? क्या सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की जो स्टूडेंट्स है जहाँ तुमने एंट्रेंच कर दिया राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें इतनी डिटेल्ड और क्लियर जो स्टूडेंट्स हो कि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द स्टेट टू से नहीं हम इसको एडवोकेट करें या हम इसके खिलाफ स्टेप्स लें। That's one factor. What are the existing restrictions? अगर already state में कोई मसला नहीं है to violate fundamental rights, then it will be more difficult for it to pass a law which violates further rights. True? How the various human rights prioritize already is हम discussion कर रही है। हम किस चीज को in our religious sentiments जो होती हैं, हमारी cultural sentiments जो हैं, उसकी वजह से कौन सी right को हम ज़्यादा value देते हैं as opposed to another right? What is the level of trust between the citizens and the executive or the law enforcement agencies? अगर हमें पता है कि police officer ने abuse करनी है अपनी authority, तो why should we give him more power over us? That's another factor. And are investigations effective and generally perceived to be fair? Element of corruption can come in here. Element of incompetence can come in here. Bad investigations, so I'm sure as judges must see this all the time. जो भी judges हमने over 150 judges who interviewed over the last 5 years. So I think one of the biggest issues they have is weak investigation for why anti-terrorism conviction rates are low. Are prosecutors able to secure safe convictions? Safe conviction is a conviction where you are sure beyond all reasonable doubt. ये नहीं कि pressure आ गया or something like that. So is the judicial system perceived to be
fair and just. Again, issues of corruption and incompetence as well as can come in. What is the potential for abuse of counter-terrorism laws? As in discretionary powers अगर आप counter-terrorism laws में ज़्यादा देते हैं, उसमें the potential for abuse is significant. और हमारी जो ब्रिटिश ने legacy छोड़ी है पाकिस्तान में heritage और इंडिया में is having wide discretion, giving wide discretion. इनकी अपनी laws अगर आप देखें, limited discretion, very set parameters होते हैं, within which an executive officer, a police officer can exercise his discretion. So it's very interesting how these are developed. So if you have any questions for this, जो theoretical framework मैंने discuss किया, तो वो हम spectrum of violence उसको कहते हैं, कि how as violence increases, how does the state response exist to that? Let's start with ordinary crimes. Lowest level of violence इसको कहते हैं. इसमें कुछ क्या बात होती है? You can increase the numbers here, but just for simplicity's sake, explanation के लिए हम शुरू करते हैं ordinary crimes. आपके PPC के generally जो PPC के crimes हैं, murder हो गया, theft हो गया, all of these things. Sorry. उसके बाद अगर violence का level हम increase करते हैं, तो we would call it sectarian violence, terrorism. This is an aggravated form of violence, an increased form of violence. और पाकिस्तान में तो हमें बड़ा clearly ये पता चलता है कि terrorist organizations हैं जिनके एक मकसद है to cause fear and panic, to promote their ideological aims and objectives. उसके बाद अगर हम civil war, domestically war-like situation हो जाए, that there is a group which has power, which is organized, and it is able to launch attacks against the state and state institutions. That would then fall in this category. Or finally, the worst form of violence, the most extreme form, is an international war. India is a jung with it. Afghanistan में troops जो हैं वो कर. So this would be the final war. We're clear on this. Now, as the intensity and nature of violence escalates, the state enhances its power to tackle this. So if we only had the PPC, and suddenly we found that yes, sectarian violence and terrorism is also there, the state now has to give itself additional powers to deal with this greater threat. Similarly, civil war शुरू हो जाए. आपके मुल्क के अंदर either state and non-state actors या दो non-state actors के ग्रुप्स जो हैं वो आपस में large scale military operations करने शुरू हो गए. अफ्रीका में भी देखते हैं. State involved नहीं होती, Lord's Resistance Army होगी, कोई और आर्मी हो जाएगी, दो local non-state actor के ग्रुप्स हैं और ये लोग आपस में जंग करेंगे. That is also civil war. ये रवांडा में जो होता है Tutsis and उनके दरमियान जो हुआ था, मिलियन से ज़्यादा लोग उठे थे. So these are all civil wars that take place, and that would then the state would need more power to be able to deal with and suppress this form of violence. So the state employs increasingly more powerful tools and mechanisms to address the problem, such as the deployment of the armed forces and the civil armed forces, Rangers in Karachi, FC in Balochistan. आमतौर पर your police would be handling violent acts, but the state said that the police is not enough in this situation. We need to enhance our laws. इससे आपके पास Section 5 है Anti-Terrorism Act, जिसके नीचे आप armed forces या civil armed forces को deploy कर सकते हैं to deal with that terrorism. Even the Criminal Procedure Code allows you dispersal of unlawful assemblies to utilize the armed forces to disperse unlawful assemblies, because unlawful assembly can escalate into a riot and into internal disturbance, etc. The situation is pretty interesting. There comes a point where the state is not able to ensure what we call human rights, fundamental rights. वो violence का generally है. So जो division है, IHL का apply किया और human rights का होती है. This is where it comes in. This is the point. So over here, for ordinary crimes or even for aggravated forms of violence, you will have a peacetime law enforcement, or the police will be your main. The police हो गया, the civil armed forces to an extent हो गए. They will be your main tool to deal with this form of violence. Beyond this, what the state has to do is that its police and civilian infrastructure is not enough, and therefore it resorts to military infrastructure or military institutions. If the nature of violence intensifies to become an internal armed conflict, a non-international armed conflict, then the state shifts the legal paradigm altogether. Now what we see
see over here is, in Pakistan, the military is happy to do every activity, from running the government to whatever. But what we see is that the military is not equipped to ensure fundamental rights, to ensure law and order. It is there to end violence or to be able to defeat the enemy. That's the primary purpose that we understand. So in that situation, यहाँ पे अगर हम देखें that only when the police and when the judiciary is actually functioning can we ensure human rights. Because they're not functioning over here, we can't ensure human rights. So the protections shift. जंग की हालत में आप human rights necessarily protect नहीं कर रहे होते, आप civilian life और civilian objects protect रहे. How can we limit the effects of war on the civilian population, on the people who are not participating in this war? So that's what the aim of IHL really is. Because protections will need, but depending on the circumstances, you will change the way you protect. Human rights में तो my right to vote भी है, but जंग की हालत में voting is a luxury. I would rather have my life protected than my right to vote. Right? So these are just some of the clarity. कुछ हम इसमें वो देखें. अब जो fundamental दो चीजें हैं जो मैं discuss करना चाहता हूँ is जो as judges and as members of the criminal justice system as well. Two elements. One is the right to life and one is the right to liberty. ये अगर हम दोनों में compare करें तो very interesting. Peacetime में human rights are broadly discussed, and the aim of the system is to capture the criminal so he can stand before one of you and be tried. Right? The use of lethal force is only a means of last resort. Police do not have the authority to just shoot someone who disrespects of a crime. Unless self-defense में कर सकते हैं, to prevent a terrorist act, they can do that. And persons can only be detained without charge and the right to liberty. उनकी liberty curtailed हो सकती है for a limited period in accordance with human rights. कुछ criteria होगा, reasonable suspicion criteria होगा, and then Article 10 of the Constitution says that within a 2-year period, 24-month period, you can only detain them for 8 months public order period or 12 months in any other case. So terrorism period बाद 1 साल से ज़्यादा किसी को detain नहीं कर सकते without charge. You have to bring a charge. Conflict paradigm, जंग की हालत, human rights may be derivated from. The state simply does not have the machinery to ensure this. Secondly, combatants, जो fighter होता है, can be lawfully targeted, चाहे वो सो रहा हो, चाहे वो खाना बना रहा हो, चाहे वो आपको गोली मार रहा हो. If he has the status of a combatant, of a fighter, he can be targeted. तो ये वो IHL के advantage कौन सा डिस्कस कर रहा था, वो ये है कि स्टेट को ये नहीं करना होता कि मैं इसको पकड़ लूँ, इसको जज के सामने दिलाना होगा, इसका 24 आवर रिमांड मिलेगा, फिर ओवर. He is actively engaged in battle with me, and therefore I am able to, he is willing to kill me, so I am willing to kill him. और इसमें कोई legal consequences नहीं है